बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर. Assalamu alaikum students. How are you? Students, I hope you all are fine and enjoying your good health. Students, in the previous lesson we completed our chapter number 11, and we did the long question number 3 in our previous lesson. I hope so that you all have done that question on your notebooks and you have learned that question too. So today it's time to solve the exercise question number 1 and question number 2 of your books, but the same questions we have in our workbook at page number 58 and 59. So open your workbooks at page 58. Let's solve the exercise. This is your page number 58 of your workbooks. Let's review our concepts. Fill in the blanks. Number 1, sound moves the quickest through it. Definitely we all know that the sound moves the quickest through the solids. Okay, so here we have written solid. In number 2, the speed of sound in it is 350 meters per second. Yes, we know in gas or air. Okay, number 3 is carries signals of sound to the brain, auditory nerve. Note down these. Number 1, solid. In the fill in the blank. Number 2, gas. Number 3, auditory nerve. And in number 4, it's back and forth movement. Back and forth movement, it is vibration. It is vibration. And in number 5, sound needs to travel all the time. Definitely sound cannot travel without medium. So sound needs to travel all the time. मीडियम की ज़रूरत होती है साउंड को ट्रैवल करने के लिए हर वक्त. ओके, नाउ कम एट पेज 59 and circle the correct answer. This one is your page number 59 of your workbooks. Number 1, sound waves travel most quickly through, definitely the answer is solids. So encircle this, solids. Number 2, the speed of sound in steel is, yes we know, 6000 meter per second. Encircle the D. Okay. Number 3, when does our body use more energy? When we speak gently, when we talk to our friend, when we cry over others, when we talk to our mother. आप भी इसको सोचिए ज़रा कि कब हमारी बॉडी जो है वो ज़्यादा एनर्जी जो है वो कंज्यूम करती है, यूज़ करती है. जब हम बड़े आराम से बात करें, या जब हम अपने दोस्तों से हम बात कर रहे होते हैं तब, या जब हम दूसरों पे चिल्ला रहे होते हैं तब, या फिर जब हम अपनी मदर से बात कर रहे होते हैं तब. तो डेफिनेटली जब हम चिल्ला के बात कर रहे होते हैं तो आवर बॉडी यूज मोर एनर्जी. एंड सर्कल द सी पार्ट सी इज द आंसर. नंबर 4, विच ग्रुप ऑफ पीपल इज अनएबल टू हियर वन अनदर. अब कौन से लोगों का ग्रुप होगा जो एक दूसरे को नहीं सुन सकेंगे? अ ग्रुप ऑफ माउंटेनियर्स ऑन K2, a group of tourists in desert, a group of astronauts on the moon, and a group of people in a closed room. Part C is our answer. Why? Because the astronauts on the moon, there will be no medium available for the sound to travel. वहाँ पर कोई मीडियम ही अवेलेबल नहीं होगा तो साउंड ट्रैवल कैसे करेगी? जब साउंड ट्रैवल ही नहीं कर सकेगी तो वो एक दूसरे को कैसे सुन सकेंगे? Sound cannot travel in vacuum. We already have come to know this. Okay.
So the C part is your answer, a group of astronauts on the moon. Number 5, sound travels the slowest in, सबसे स्लो साउंड किस मीडियम में ट्रैवल करती है? डेफिनेटली एयर में, तो इसको आप एनसर्कल कर लें. द आंसर इज डी. सो वी हैव कंप्लीटेड द एक्सरसाइज and we have completed the page number 58 and 59, and in the next lesson definitely we are going to start our next chapter. But our today's diary is, note down the diary, learn and write page number 58 and 59 of your workbooks. Page number, I repeat, learn and write पेज नंबर 58 एंड 59 ऑफ योर वर्कबुक्स. ये आपकी डायरी है. पेज नंबर 58 और 59 आपने राइट डाउन भी कर लेना है, इसको कंप्लीट भी कर लेना है और लर्न भी करना है आपने अच्छे से. ओके जी, थैंक यू सो मच. अस्सलाम वालेकुम.